So we're going to use some techniques because it takes a long time to actually write an electronic configuration. So what are the possible shorter methods to write an electronic configuration? So or the quicker method, because in MCQs you can't really, we'll be doing MCQs very quickly after this. So in MCQs specifically, you don't have a lot of time. So the quicker method is that first thing is, if you look at the periodic table, the period number gives you some information, and the specific information that it gives you is the number of is the shell number. It's the shell or the principal quantum number. So it's the shell or the principal quantum number, which I told you was the energy level. So by just looking at the period, and hopefully everyone knows what a period is. It's the horizontal rows in the periodic table. So, and then you have the group number. By just looking at the group number, you'll be able to figure out what the outer shell electronic configuration is, or the valence shell electronic configuration is. So group number. Sir? हाँ जी. Sir, I just joined. आपने ये period number के साथ क्या लिखा है? It is the shell or principal quantum number? हाँ, मतलब वही कर रहे थे ना, हम पता कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस है ना, तो हमने लास्ट टाइम, तो उसका शॉर्टकट क्या रहेगा? हमें शेल नंबर क्या होता था? इट वाज द एनर्जी लेवल, राइट? कि the more energetic the electron, the further away it is from the nucleus. ठीक है? I mean 1s का मतलब है कि the electron is very close to the nucleus. It's got very less energy. 3 या 4 का मतलब है कि it's very energetic. ठीक है? तो the point is कि every time electronic configuration लिखने में time लगता है ना, it takes a long time to write an electronic configuration. So what's the shortcut? The shortcut is that you can figure out the shell number by just looking at the period number, and the group number would give you an idea of what the valence shell. It will give you an idea of the electronic configuration of the valence shell. So here is what it's going to tell you. For example, if something is in group 1, so that means its valence shell electronic configuration is going to be S with 1 electron in it. If something is in group 2, so that means its outer shell electronic configuration is going to be S with 2 electrons in it. Isi tarah, then you have group 3. So if anything is in group 3, that means its valence shell is going to look like this. It's going to be S2 and P with 1 electron in it, or and P with 1. फिर इसी तरह you have group 4. So if something is in group 4, तो इसी तरह चलता रहेगा. It's going to be S2 and P2. And then you have group 5. It's going to be S2 and P3. And then you have, remember, this is going to be very useful because you don't have time to write the whole electronic configuration. You have to be very quick. So this one would be S2 and P4. Okay, group 7 is going to be S2 and P5. And then you have the last one, group 8. I mean, their names have changed. I'm just going to add this. It's going to be S2 and P6. So this is 18 now. This is 17. This is 16. This is going to be called 15, 14. And this one is now called 13. So just remember that. So you can pick any element in the periodic table, like where's the periodic table? So pick any element with the periodic table at the bottom. ठीक है, यहाँ पे किसी भी element को pick करो and you will figure out the electronic configuration. Like if I pick phosphorus, it's in the 3rd period and it's in group 5, group 15. So I'm going to take the example of phosphorus now. So the information that I have, although phosphorus has 15 electrons,
The information that I have is that it's in period 3 and it's in group 15. So group 15 tells me that it's going to be, look at group 15. Group 15 tells me that it's going to be S2 and P3. So I got that information. It's going to be S2 and P3. और ये जो period number है ये आपको बता रहा है कि it's the shell number, principal quantum number. So that means it's going to be shell number 3. So it's going to be 3s2. The outermost electronic configuration is going to be 3s2 and 3p3. That's the electronic configuration. And for 15 electrons, you can actually use the off-or principle and compare this. It's going to be 1s2, 2s2, 15 electrons, 2p6. That's 10 electrons. Then it's going to be 3s2 and 3p3, sorry. सर हाँ जी, सर आपने कौन सा एलिमेंट को लिया यहाँ पे? phosphorus. ओके ठीक है, तो इसका देख लो ना कि इसकी जो outer electronic configuration, it's coming out to be exactly the same. It's in group 15, right? So phosphorus is going to be anything that's in group 15 would be S2P3. And उसका जो बाहर वाला shell होगा ना, that's going to be S2 and P3. You would know the shell number directly. You can, by just looking at the group number, you can figure out what the electronic configuration is. एक और उठा लेते हैं. I've got Mg. So I've got Mg and Mg is 12. And it's in I think it's in period 3. मतलब वो यहाँ पे देख लो कि it's in Mg कहाँ पे? This is Mg, it's in period 3, 1, 2, 3, and it's in group 2. So this one is period 3 and group 2. So its electronic configuration should be, if it's in period 3, it's going to be shell number 3. And if it's in group 2, so that means यहाँ पे देखो, group 2 is going to be the outermost electronic configuration is going to be S2. इसका मतलब है इसकी जो electronic configuration, that's going to be the outermost shell is going to be 3s2. And you can write the electronic configuration, the whole of it. It's going to be 1s2, 12 electrons, 2s2, सर 2p. ये हाँ सर हाँ जी, ये जो मैग्नीशियम के लिए एक्सप्लेन जरा कर दें. कौन सा? मैग्नीशियम. हाँ, तो मैग्नीशियम का ये है ना कि पीरियड 3 में है, तो उसका क्या मतलब है? शेल नंबर 3 S2 समझ नहीं आ रहा. नहीं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि electronic configuration of valence shell किस तरह पता लगती है? If it's in group 2, तो उसका outermost क्या होगा? It's going to be it's S. S2. तो इसका मतलब है मैग्नीशियम का जो outermost होगा ना, that would be 3s2. तो वो पूरी भी अगर लिख लो तो एंड में वही आता है. Okay. ठीक है. The point is that it just saves you time. I mean, for small atoms, you can although write electronic configurations, but who's going to write the electronic configuration for an atom with 88 electrons? मतलब radium की electronic configuration क्या होगी? I mean, 88 electrons, पूरा दिन लग जाएगा 88 electrons की 1s2, 2s2, 2p6. I mean, 88 तक जाने के लिए, ठीक है? So you can directly know कि भाई what would radium be? I mean, radium's electronic configuration, it's going to be a colossal waste of time if you even try writing the electronic configuration of radium, ठीक है? So you know कि it's in group 2. So that means by default it means कि outermost में तो 2 electrons होंगे, S2 होगा. पीरियड कौन सा? इसका है मेरे ख्याल से एक तो ऊपर वाला खाली 1 2 3 4 5 6 7. तो 7s2 होगा ना? हाँ, तो इसका मतलब है पीरियड नंबर, अच्छा पीरियड नंबर इज 7. तो वो बस ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि इट्स गोइंग टू बी 7s2. और मतलब ऑब्वियसली 88 तो यहाँ पे हेल्पफुल होती है. I mean, you can't write the electronic configuration of 88 atoms. तो रेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वैसे गूगल कर लेते हैं कि इट्स गोइंग टू बी
खैर वो 7s2 ही आ रहा है. They didn't, ये सारी है, ठीक है. If you can see this, तो it's 2p4d10, वो सारा वो arrows को follow करते रहो. End में it's going to be 7. The outermost shell is going to be 7s2. ठीक है. And remember, why is the outermost shell important? क्योंकि it's the outermost electron, जो most energetic electron, जो nucleus से they're very far away. They are the ones that are always involved in bonding. ठीक है. Remember, kids, the inner electrons don't do anything pretty much most of the time, so they're not very important. मतलब we drew an atom of sodium somewhere. कहीं पे draw किया था, एक second. अच्छा, we had drawn a sodium atom. So remember, sodium की वो जो पहले दो electrons, the ones that are right in the middle over here, 1s2, they're not important, ठीक है, because they don't do anything. जो interaction होती है बाहर वाले से, the most energetic 3s1, जो बाहर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, नेगेटिव चार्ज उसका, this is the one that is going to be lost. This is the one that's going to interact with the other atoms, ठीक है. So we're always interested in the outermost shell, ठीक है, not the inner shells. We don't care what these electrons are because they don't do much. They don't do anything during chemical bonding. अच्छा, एक तो ये हो गया, ठीक है. So that's one quick way of figuring out the electronic configuration of an atom. Okay, and every time you're going to use this method for bigger atoms. No one is going to waste time writing electronic configuration. Chota atom hoga, small atoms, you can do that. I mean, for magnesium, it's easy. It's 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. So there's no issue there. But for radium, you can't do that. And lastly, the very last thing is there's another notation, which is that sometimes what you do is you use sometimes what you do is that noble gases. अच्छा, इसके अंदर ना there's one problem over here, and that is what do you do for transition metals. पहले transition metals discuss कर लेते हैं. अच्छा, so what do you do for transition metals? So for transition metals, the outer electronic configuration is not very simple. It's slightly more complicated. So now what happens for and the first thing is transition metals, they start at where's the periodic table? They start at period number 4. Before that, you don't have transition metals. Like first period, second. First period is it's just हाँ जी. तो ये डी ब्लॉक होता है ना, ये ट्रांजिशन एलिमेंट. हाँ, वो सर भी मैं आ रहा हूँ. अच्छा, so first thing is they start at period number 4. उससे पहले तो थे ही नहीं, ठीक है. So transition metals, they start at period number 4 and after calcium. And the correct name for them is not actually transition metals. ठीक है, they're actually, the proper name is D block elements. You have to always call them with D block. I mean, if you call them transition metals, you might lose marks on that. So proper name is D block elements. Now, why do you call them D block elements? Because the last electron goes into a D subshell. So it goes into a D subshell. So which is why you call them D block elements. And they start after calcium. So calcium is group 2. Okay, so you start off after calcium, which is group 2. Calcium electronic configuration is 4s2.
सर ये आपने यहाँ पे क्या लिखा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन? goes into a d subshell. ओके। ठीक है, अच्छा, calcium की electronic configuration, if you write it, it ends with 4s2. Now after calcium, transition metals start. You've got scandium, vanadium, titanium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, and I'll check cobalt, nickel, and copper, and zinc. ठीक है, so ये 10 जो है ना transition metals आ जाते हैं, ठीक है, these are your transition metals. Now what happens is the outer shell electronic configuration remains the same as calcium. लेकिन जब 4s2 fill होता है ना, तो after that, I mean, scandium's going to be, scandium's electronic configuration would be sideways like that. It's going to be argon tak 18 electrons, and then it's going to be 3d1, and then 4s2. Vanadium's electronic configuration is going to be, everything would be the same, except it's going to be 3d2, and then it's going to be 4s2. So the point is, the outer shell kind of remains the same. That is not changing. वो हर दफा इलेक्ट्रॉन ना एक अंदर वाले 3D के अंदर ना फिल होता जा रहा है. Titanium would be the same. It's going to be argon, and then it's going to be 3d3 and 4s2. तो बाहर वाले में, हाँ जी सर सॉरी, असल में मतलब काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछने पड़ रहे हैं, लेकिन असल में कनेक्शन का इशू, ये आपने एआर क्यों लिखा उसके साथ और फॉरेस्ट इस तरह से? नहीं, वो मैं बता देता हूँ. एआर मैंने क्यों लिखे वो मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है. मैं बस खाली ये कह रहा हूँ कि transition metals, when you move towards transition metals, ठीक है, calcium's electronic configuration and transition metal electronic configuration is, ignore argon, ठीक है, अभी argon की मैं बात समझा देता हूँ बाद में. कैल्शियम जो है ना, उसकी अगर पूरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो, इट एंड्स विद 4s2, ठीक है. तो स्कैंडियम, वैनेडियम, टाइटेनियम सारों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इफ यू राइट इट वुड आल्सो एंड विद 4s2, एक्सेप्ट कि हर दफा डी के अंदर ना इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते जाएंगे. मैग्नीज में भी there's going to be, the only difference would be all the electronic configurations would be the same, except that every time there would be different number of electrons in the d subshell. I mean, you can go and try writing the electronic configuration using the Aufbau principle. The only difference would be कि D के अंदर ना number of electrons change होते रहेंगे, ठीक है. Is this point clear? Which is why they're called D block elements. So the outer electronic configuration kind of remains the same. The D keeps changing. But the zinc तक आओगे ना, zinc पे what will happen is that it's going to be 3d10, वो जो end होगा ना, that would be 3d10 and 4s2. So the outer is still the same, except that the D is continuously changing. So transition metals are slightly more complicated. That the outer electronic configuration, if you keep writing electronic configurations, the whole of it, the outer remains the same every time there's a different number of electrons in the D subshell. Or this is the reason why they call them D block elements. That's the proper name. You don't call them transition metals because not all of them are transition metals. Because transition metals have a certain property, which is that they're good catalysts, they're colored compounds, they have variable charges, they have certain properties, which is why you call them transition metals. Specifically, they form colored compounds. So the point is that ये जो पूरा block है ना, this entire block over here in the middle, they are not all of them. Most of them are transition metals, but not all of them. For example, zinc doesn't have variable oxidation states. Zinc doesn't form colored compounds. Zinc is not a good catalyst as well. So zinc is not it's not a transition metal. It doesn't show properties of transition metals. So the proper term that should be used for them is D block elements. Some of them are transition metals. Chromium has colored compounds. Iron has colored compounds. Copper sulfate, that's blue in color, that's colored compounds. So a lot of them are transition metals, but not all of them. ठीक है, is this clear? Is this clear?
Yes, sir. अच्छा बस इसमें ये याद रखना कि the quicker method, because remember we're trying to avoid वो जो पूरा offer principle arrows, we're trying to avoid that, ठीक है? So the shortcut is for calcium, just remember the outermost calcium is period 4. I mean, how do you figure out the electronic configuration of calcium? It's period number 4, so that's 4. It's in group 2, so that's S2. तो इसका जो बाहर वाला है that's 4s2. The next transition metals, all of them, they D block elements, sorry, they would also be 4s2. Except every time there's going to be an extra electron in the inner D subshell, 3D subshell. So make sure you remember that. Okay, all the electronic configurations would be the same as calcium, except there would be more and more electrons being added into the 3D subshell. And similarly, since we are on this, group 1 and 2 are called S block elements. Why? Because the outer electronic configuration is S. And 13 to 18, they're known as P block elements, because the outer electron goes into a P. So these are your P block. That's your S block. And finally, this other notation. So how do you tie this in with so using noble gases to write electronic configurations. So noble gases and electronic configurations. Now remember, we're trying to figure out a method of avoiding the need to write electronic configurations, like the whole of it. So for example, I've got lithium. Lithium's electronic configuration is 1s2 and it's 2s1. Okay, that's lithium's electronic configuration. The shortcut is sometimes lithium would be written as, lithium has 3 electrons. So sometimes lithium would be written as helium and 2s1. What that basically means is that, so what that basically means is that 1s2, like helium has 2 electrons. Like look at the periodic table and you'll realize that helium just has 2 electrons. That's the proton number at the top. It's got 2 electrons. So you would know that this thing, this first part, is basically helium's electronic configuration. So instead of writing 1s2, you could just write helium and then it's 2s1. Now this is going to be useful when you write bigger atoms. For example, let's talk about potassium. Potassium is 19. Now you use the offer principle, you either write the whole electronic configuration, which is going to be 1s2, 2s2, 2p6, and then it's going to be 3s2. We'll get 1 is 3s2, 3p6. And after that, it's going to be 4s1. तो एक तो ये है कि पूरी बैठ के लिखो ना, you have to write, spend time writing the whole electronic configuration. The shorter method is that this is 18 electrons. So what you could have done is that go to the periodic table and see what is 18 electrons, which noble gas is. You would realize that argon is 18 electrons. So what you can do is, you know that argon is 18 electrons. So the shorter way is that you write the electronic configuration of argon followed by 4s1. So what that basically means is that it's argon's electronic configuration plus 4s1. So up till this point, it's argon and then it's 4s1. So it's a lot quicker to write this and a lot easier to write that. If you want to write the electronic configuration of, let's say, chlorine, chlorine is 17 electrons. So chlorine is going to be
1s2, 2s2, and it's going to be 2p6, and then it's going to be 3s2 and 3p5. Now for chlorine, you would realize that this part over here up till this point, look up till this point, this is neon. So it's basically neon's electronic configuration followed by 3s2 and 3p5, the outermost shell. And we just learned how to write the outer shell electronic configuration. So this is another shortcut that it just saves time. You don't have to write the whole electronic configuration. You can just write neon and then start after that. I mean, we just learned how to write the outer shell electronic configuration. And you can add this part yourself. 17 electrons there, so there's 7 electrons in the outermost shell. So you're left with 10. What is 10 electrons? That's neon. Is this clear? You clear? Mahad, is this clear? Yes, sir. Okay. So that's it. So we're basically done with electronic configuration. Remember, the shortcuts are very useful. It saves you time. For example, यहाँ पे क्या था कि we did the radium thing, right? So what did they write? They were not going to write the whole thing. I mean, it's just a waste of time. Like over here, they just said the outer shell electronic configuration is 7s2. The radium had 88 electrons. To remove the outer shell, you're left with 86 electrons. Go and have a look. What is 86 electrons? 86 electrons was radon, which is the noble gas over here. So radium's outer shell, I mean, this is radium 88 electrons. We figured out that this was 7s2. The outermost shell was 7s2. So remove the 2 electrons, you're left with 86. So do पीछे चले जाओ, 86 is radon. So it's basically radon's electronic configuration, and then it's 7s2. So up till this point, this is radon's electronic configuration followed by 7s2. So most elements would be described in this manner. You can pick some other random element, for example, barium. So I'll write down the electronic configuration. I'll think of the electronic configuration of barium. So it's for barium, it's going to be 6s2. It's in the sixth period, and it's s2. So 6s2, and go back 2 steps, and the noble gas is xenon. So it's xenon. हाँ जी. सर इसके अंदर इस तरह से कर सकते हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट हो उसके मतलब कोई भी मतलब हम लोग एलिमेंट ले ले उसका रैंडमली और उसके साथ उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच कर जाए और आखिर में जाके सिंपलीफाई कर ले, इस तरह से कर सकते हैं कोई भी एलिमेंट हो. नहीं समझ नहीं क्या कह रहे हो. लाइक अगर हम लोग किसी भी एलिमेंट को ले सकते हैं ना फॉर सिंपलीफिकेशन. नहीं, ये वाला एलिमेंट कह रहे थे कि जो हम अच्छा मुझे समझ आ गया. ये कह रहे हो ना कि कहाँ पे गया. अच्छा ये कह रहे हो ना कि मैंने यहाँ पे वो क्यों यूज किया हुआ है. नियॉन की जगह कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ये कह रहे हो ना. यस सर. नहीं, लेकिन वो यूजुअली नोबल गैस लेते हैं आप. और लाइक सिर्फ नोबल गैस इसको कंसीडर करते हैं. हाँ, और वो भी करते हैं इस तरह के सिंपलीफाई करना है ना, तो आप बेसिकली वो नोबल गैस लेते हो जो उसके बिल्कुल क्लोजेस्ट हो. ठीक है जी. मतलब मैं ये भी कर सकता था कि हीलियम ले लेता, ये हीलियम है, उसके बाद ये लिख देता सारा. ठीक है, लेकिन वो सिंपलीफिकेशन तो ना होती ना. यस मुझे तो लिखना उतना ही पड़ता ना. हम तो बेसिकली शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं ना. तो बेसिकली हम वो नोबल गैस उठाएंगे जो इसके क्लोजेस्ट होगी. ठीक है. ओके सर. यानी अगर मैंने इफ आई वांट टू पिक बैरियम, तो बैरियम इज 56. ठीक है, उसका मुझे पता लग गया कि आउटरमोस्ट शेल इज 6s2. तो आउटरमोस्ट तो निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स पीछे कर लो, तो 2 इलेक्ट्रॉन पीछे कौन सा नोबल गैस आता है, जीनॉन. तो बैरियम जो होगा ना, दैट वुड बी जीनॉन, उसके बाद 6s2. ठीक है, मतलब इफ आई जस्ट गूगल बैरियम, तो बैरियम्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन would be the same. वही जीनॉन और फिर 6s2, और उसकी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो यहाँ पे लिखी हुई है. मतलब वो यहाँ था कि it's xenon, और फिर वो एंड में 6s2 आ रहा है. ठीक है, क्लियर है ये.
Yes, sir. So remember, electronic configurations, you have to be quick with electronic configurations. अब ये कि पास वापस तो कर लेते मतलब लिथियम हीलियम का, क्या चीज? सर लिथियम हीलियम के मतलब करीब होगा ना, जो भी हाँ, हमारा मैंने मतलब लिथियम के noble- केस में, हाँ, लिथियम को तो खैर फायदा ही कोई नहीं है ना उसको शॉर्ट लिखने का, कोई फायदा तो हुआ नहीं है, वो तो उतना ही लिखना है, ठीक है। तो लिथियम को तो यूजली आप, खैर मतलब मैं अगर यहाँ पे लिथियम गूगल करूंगा ना, लिथियम की गूगल भी शायद प्रॉब्ली पूरी देगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। लेकिन ये पे हम हल्का इन्हें रेस, नोबल गैस कंपेयर क्यों कर रहे हैं, मतलब नहीं कोई नहीं, हीलियम का तो खैर उससे दे रही है, लेकिन नहीं वो इसलिए कह रहे हैं, मुझे बताओ कि ये पूरा लिखना आसान है या ये लिखना आसान है? ये लिखना सर ज्यादा ये रेफरेंस जी। मतलब अगर तुम्हें बार बार उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिखना है तो ये पूरा लिखना है हर दफा, वो टाइम वेस्ट है, ठीक है। तो मतलब वो ए आर क्यों लिखा आपने इसके साथ? हाँ, क्या चीज? सर ए आर क्यों लिखा आपने इसके साथ? इसके साथ यार, जी सर वो आर्गन है, लेकिन 4s1 कैसे? नहीं 4s1 है ना इसका क्रिप्टॉन, सॉरी ये क्रिप्टॉन कह रहा हूँ, पोटेशियम क्या होता है? पोटेशियम इज, वेयर इज द पीरियोडिक टेबल, एक सेकंड, पोटेशियम यहाँ पे है, कहाँ पे है ये? ग्रुप 1 है ना, तो 4s1 बनता है ना, मतलब फोर्थ शेल, और s1 है ना, तो 4s1 बनता है, और उससे पिछली नोबल गैस कौन सी है? इट्स आर्गन। क्लियर है? तो वैसे वो ज्यादा इजी है अगर हम ऊपर वाले ब्लॉक से देखकर कर लें, पीरियड और ग्रुप नंबर से। नहीं नहीं, उससे तो ये पता लगता है ना, 4s1 पता लगता है ना, मतलब वो तो आप कर रहे हो इसमें, उससे तो आउटर मोस्ट पता लग रहा है ना। मैं वो कह रहा हूँ कि बाकी का क्या करोगे, जो बाकी इलेक्ट्रॉन अंदर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उधर उधर आर्गन लिख दो बस, ठीक है सर। ठीक है। जैसा क्लोरीन का पता लग गया ना कि वो H2 ग्रुप 17 होगा, सॉरी, क्लोरीन का पता लग गया कि वो ग्रुप 17 है, तो क्लोरीन जो है ना वो H2P5 होगा, और वो थर्ड शेल में तो 3s2 3p5 होगा, ठीक है, वहां तक तो पता लग गया, ठीक है। तो उसका मतलब है ये आउटर मोस्ट शेल यानी 7 इलेक्ट्रॉन्स का तो पता लग गया आउटर मोस्ट, तो पीछे जो बाकी 10 बचे हैं वो क्या है? वो नियोन है, ठीक है। तो ये अंदर वाले शेल हो गए और ये बाहर वाला शेल, एंड ऑलवेज वो नोबल गैसेस आर यूज, ठीक है। अच्छा खैर वो पास वापस कर लेते हैं इसके कि अच्छा इसमें है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही पहले कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा फर्स्ट वन वो कह रहे हैं कि, अच्छा स्टार्टिंग क्विकली, ठीक है। फर्स्ट वन वो कह रहे हैं कि एमसीक्यूज इजी होता है बट दे आर ट्रिकी, ठीक है, फॉर स्पेशली फॉर दिस वन। वो कह रहे हैं 8 प्रोटॉन वाला एटम है, तो उसका सेकेंड शेल का क्या क्या सिचुएशन है? सेकेंड शेल, so 8 electrons is going to be what, 1s2 2s2 2p, क्या होगा 2p4, नहीं जी सर। हाँ, तो सेकंड शेल क्या होगा? s में 2 है और p में 4 है, तो ये s है, s में कितने हैं? s में 2 है, ठीक है, और p में कितने हैं? ये p है, p में 4 है, तो इसलिए आंसर क्या होगा? इट्स गोइंग टू बी बी, ठीक है, s2p4 आ रहा है। फिर उसके बाद यू हैव द नेक्स्ट वन, वो कह रहे हैं कि how many valence shell and unpaired electrons are present in one atom of, अच्छा वैलेंस शेल कौन सा है? वैलेंस शेल इज दिस वन, जो सबसे बाहर वाला है, थर्ड शेल, ठीक है, दैट्स द वैलेंस शेल। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन टू दोनों, अनपेड होंगे। अच्छा और अनपेयर्ड कितने हैं? तो एस तो पूरा, एस इज फुल, तो वो तो पेयर्ड है, और 3p4 है। 3p4 का मैंने क्या बताया था, हाउ डू यू फिल अ सब शेल के, उसमें देयर इज गोइंग टू बी 3px 3py एंड 3pz, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो किस तरह होंगे? पहले सारों में एक एक जाएगा, फिर पहले वाले में 2 हो जाएंगे, तो पार्ट ठीक है, इट्स गोइंग टू बी 2 अनपेयर्ड, ठीक है। फुल ऑर्बिटल होता है दैट मींस पेयर्ड,
तो the answer would be D. फिर वो कह रहे हैं in which, हाँ जी, सर इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लाइक हमें लास्ट जो मतलब सेम ऑर्बिटल लेवल वाले होंगे उनको हमें कंसीडर करना होगा एज वैलेंस शेल और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ, क्योंकि इसमें ये ज्यूम करो ना कि अंदर वाले शेल तो फुल होंगे ना सारे। या देखो ये अंदर वाले बेसिकली तो सारे फुल है ना, तो उनको तो देखने की जरूरत ही नहीं है। 3s2 भी फुल है ना, सिर्फ मसला किसमें है, ये पी के अंदर ही मसला है ना कि वो फुल नहीं है। या और इसके साथ जो साथ में जो लेवल वाला है जो 3s2 हमारे पास उसे भी कंसीडर करना होगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ सारों को करो कंसिडर, हाँ, खाली 3s को ना छोड़ो क्योंकि उसे अनपेड के लिए तो उसने नहीं कहा, कि उसने कहा कि बस अनपेड ढूंढो ना, तो हाँ, अंदर वाले तो सारे फुल है ना, तो सिर्फ CP4 होगा जिसके अंदर अनपेड होंगे, ठीक है। अच्छा चलो ये वाला कि वो कह रहे कि विच एटम आर ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड। मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूंगा। आई नो कि सिलिकॉन इज इन ग्रुप 4, तो ग्रुप 4 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है? S2 और P2 होती है मेरे ख्याल से। उसमें देख लेते हैं कहाँ गया हमारा, इसको देख लो, ग्रुप 4 14 S2 P2, ठीक है। सो यू हैव S2 एंड P2। तो S2 P2 का मतलब है उसने कहा कि सारे पेड़ होने चाहिए, तो P तो फुल ही नहीं है। P अगर पेड़ होता तो 6 होते इसके पास, सो इट्स सो दिस इज रॉन्ग। अच्छा सल्फर आ गया, सल्फर इज इन ग्रुप 6। ग्रुप 6 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है? इट्स S2 एंड P4 होती है आई थिंक। तो दोबारा से P पेयर्ड ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये मतलब इट वुड बी PX PY एंड PZ। 4 हैं तो दो तो अनपेयर्ड होंगे, ठीक है। अच्छा ब्रोमीन आ गया, बोरान। क्या हुआ है? अच्छा समझ लगा बोरान है। अच्छा ब्रोमीन आ गया, वो ग्रुप 17 है। तो ग्रुप 17 इज S2P5, उसका जो बाय वाला शेल होगा दैट वुड बी S2P5। P फिर से कंप्लीट नहीं है, अनपेयर्ड है। तो पीछे कौन सा रह गया आंसर? बैरियम आ गया। बैरियम क्या था? ग्रुप 2। तो ग्रुप 2 क्या होता है? S2 होता है, और आई थिंक 6 शेल था, 6s2। तो अगर बाहर वाला पेड़ है तो अंदर वाले जो होंगे वो तो सारे वैसे ही पेड़ होंगे, मतलब वो अंदर वाले फुल हुए होंगे तब जाके बाहर वाले की बारी है ना। तो दैट मीन्स के ऑल ऑफ देम आर फुल, ऑल ऑफ देम आर पेयर्ड। इज दिस क्लियर? यस सर। अच्छा देन अच्छा वन थिंग दैट वी डिडंट डू इज वो छोटा सा ऐड कर लेते हैं कि व्हेन आयंस आर फॉर्म्ड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज लॉस्ट फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल, सबसे बाहर वाले से, ठीक है। आयंस का याद रख लेना, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज लॉस्ट from the outermost shell, ठीक है। for example over here if potassium were to lose electrons then and potassium were to form +1, तो ये सबसे बाहर वाला जो है ना, that is the one that's going to lose electrons, ठीक है। अच्छा तो वो इधर आयन की बात कर रहा है, so what you'll do is in this case you would have to या तो शॉर्टकट यूज कर लो कि निकल है, तो निकल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसी होगी? आई टोल्ड यू कि कैल्शियम जैसी होगी। कैल्शियम की क्या थी कि कैल्शियम वाज आर्गोन और 4s2 था, राइट? तो या तो बैठ के, खैर इस पे टाइम लगा के वैसे पूरी लिख लो, लेकिन व्हाट यू कुड आल्सो हैव डन वाज के मतलब इसमें टाइम बचाने की इतनी जरूरत तो है नहीं, बट व्हाट यू कुड हैव यूज्ड अ शॉर्टकट। आई टोल्ड यू के फॉर ट्रांजिशन मेटल्स व्हाट यू कुड डू इज कि कैल्शियम के बाद दिस इज 4s2, फिर देन इट बिकम्स 3d1 3d2 3d3 3d4 3d5 3d6 3d7 3d8 3d9 3d10, यहाँ तक 3d10 हो जाता है। मतलब ये कैल्शियम के बाद फिर बस डी फिल अप हो रहा होता है, ठीक है। द 3d इज गेटिंग फिल्ड अप। आई टोल्ड यू, यहाँ पे हमने लिखा भी था फॉर ट्रांजिशन मेटल्स, आई टोल्ड यू दैट कैल्शियम तक 4s2 फिल हो जाता है, 4s2 के बाद इट्स 3d स्टार्ट्स फिलिंग अप, तो निकल तक इट्स गोइंग टू बी 3d8। So the answer to this question would be nickel तक it's going to be 3d
3d8. And since it's nickel 2 plus, so the 4s electrons would be gone, so it's going to be D. ठीक है, is this clear? यस यस। और पोस्ट फिलिंग केस में जब होता है हमारा मतलब 4s में पहले जाता है ना डी से। असल में नहीं, असल में ना पहले नहीं जाता, होता ये रिमेम्बर कि किसी भी एटम में ना यू नॉट एक्चुअली मतलब निकल की मैं लेट्स से बात कर लेते हैं, पूरी लिख लेते हैं उसकी अकॉर्डिंग टू द ऑपर प्रिंसिपल इट्स 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 एंड देन इट्स 3p6, फिर 4s2 आता है और फिर 3d8, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज कि दिस इज यू राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हर एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स पहले से होते हैं, कोई उसमें ऐड नहीं कर रहा होता। बात समझ आ रही है? मतलब ये नहीं हुआ था कि 4s में पहले गए थे और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पहले से इकट्ठे उसके पास हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? जी सर। तो हमें मैंने मुझे जो बताया था टीचर, उन्होंने कहा था कि मतलब 4s की एनर्जी शायद कम होती है डी से। हम उस पे नहीं, उसकी एनर्जी कम नहीं होती, वो खैर उसके अंदर अगर जाते हो ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो एटम है ना ट्रांजिशन मेटल, ठीक है, होता ये व्हाट हैपेंस इज कि इनिशियली स्टार्ट के अंदर 4s में ना इलेक्ट्रॉन रखना थोड़ा सा आसान होता है, ठीक है। मतलब लेट्स अज्यूम करते हैं हम एक एटम है, ठीक है, एक एटम है उसके अंदर ना इलेक्ट्रॉन्स आप ऐड कर रहे हो, जबकि आप किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते नहीं हो, इलेक्ट्रॉन्स पहले से होते हैं उसमें उसके पास, ठीक है। व्हाट हैपेंस इज कि थर्ड शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं ना तो थर्ड शेल में थोड़ी जगह फुल हो जाती है, तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना उनके लिए मोमेंटरली थोड़ा आसान होता है 4s को फिल करना, ठीक है, कि वो थोड़ा दूर चले जाते हैं न्यूक्लियस से, क्योंकि रिपल्शन ज्यादा हो गई है, क्योंकि बिकॉज द थर्ड शेल ऑलरेडी हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ ना कि आपका निकल है 2 इलेक्ट्रॉन्स अंदर सबसे क्लोजेस्ट वाले शेल में, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब फॉर अ वेरी टेम्पररी इंस्टेंस थर्ड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, रिमेंबर थर्ड शेल इज मच बिगर इन साइज, लेकिन जो अगले 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना जो ये 4s वाले हैं, they find it a lot easier to actually occupy the outer electron। अच्छा, लेकिन जब 4s भी फिल हो जाता है ना तो फिर होता है कि दे स्टार्ट फिलिंग द इनर शेल अगेन, तो उनको दोबारा से ना 3d थोड़ा आसान लगने लग जाता है फिल करना, ठीक है। सो डू यू गेट माय पॉइंट के द एनर्जी फ्लक्चुएट्स कि फॉर ट्रांजिशन मेटल्स if the 3d is empty if the 3d is empty then it's easier to actually fill electrons in the 4s, ठीक है, but once the 4s is full it's easier to actually fill electrons in the 3d। तो वो एनर्जी लेवल्स जो है ना उनके फ्लक्चुएट करते हैं, उनके बहुत करीब करीब हैं 3d और 4s के अंदर ना एनर्जी लेवल्स में फर्क इतना ज्यादा नहीं है, तो इसलिए वो चीजें थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट दिस, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि वो जब थर्ड शेल फिल हो रहा था ना तो थोड़ी देर के लिए ना वो इलेक्ट्रॉन्स फिल करना बाहर वाले शेल को वो थोड़ा आसान हो गया था बिकॉज देयर वाज टू मच रिपल्शन, लेकिन जब बाहर भी इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो इलेक्ट्रॉन्स got attracted to the nucleus and they decided to fill the inner shell। So is the point clear कि initially the 4s is easier to fill, for example calcium के केस में as long as the 3d is empty the 4s is easier to fill, is this clear? यस सर क्लियर। ठीक है, तो और इनके सर जो जैसे जैसे शेल्स बढ़ते हैं तो मतलब एनर्जी तो हमारी ज्यादा होती जाती है ना हाँ क्योंकि शेल्स वो जैसे बढ़ते हाँ क्योंकि लो एनर्जी शेल्स जो है ना वो तो अंदर थे ना, तो अब इलेक्ट्रॉन हैज टू बी एनर्जेटिक क्योंकि इट हैज टू ऑक्यूपाई द आउटर, इट्स गोइंग टू बी फर्दर अवे। मतलब असल में तो एटम इस तरह लगता है ना, असल में तो एटम की शक्ल ये है, असल में तो एटम इस तरह है ना कि वो, तो वही हो रहा है कि जब अंदर वाले शेल फिल हो रहे होते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन, ये जो 4s वाली बात आती है ना वो इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं थोड़ा बाहर चला जाओ, क्योंकि वहां पे जगह ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन भी कोई नहीं है तो रिपल्शन भी नहीं है, ठीक है, बात समझ आ रही है? सर हाँ यस जी। सर। सर आपने कहा है कि जो हमारे पास 4s है अगर वो हमारे पास फिल्ड हो तो हम इट इज क्वाइट इजी फॉर अस टू लाइक फिल 3d ऑर्बिटल्स, सही है? तो असल अगर में लेट इन इन दोनों का जो एनर्जी लेवल है ना वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ जस्ट अ सेकंड। अगर अगर यहाँ पे इफ आई कैन फाइंड अ
फाइंड अ डायग्राम के एनर्जी लेवल्स ऑफ सबस्टेंस। ठीक है, ये अब 3D4, हाँ। अब एम्प्टी होगा ना, एम्प्टी के तो ये सिचुएशन होगी कि एज लॉन्ग एज द 3D इज एम्प्टी, ये 4s और 3D नहीं, इसने गलत किया हुआ है, ये एक्चुअली 3D है, कोई बेहतर डायग्राम नहीं है। हाँ ये है, चलो इसको कर लेते हैं। अच्छा, सो 3D और 4s के बीच में एनर्जी गैप इज वेरी क्लोज। आई मीन दे ऑलमोस्ट द सेम, दे ऑलमोस्ट द सेम एनर्जी लेवल। ठीक है, तो ये देखे ना, ये स्विच पे है, बल्कि इसने शो भी किया हुआ है। ये चीज याद रखनी है कि अब पता नहीं ये एनिमेशन किस तरह थी, इफ वी कैन गेट हैंड्स ऑन दिस एनिमेशन। अच्छा, जब तक वो एम्प्टी था ना, 4s पहले फिल हो रहा था, लेकिन as soon as the 3D gets filled तो 4s हायर एनर्जी पे चला जाता है। ठीक है, 3D इज द लोअर एनर्जी और 3D फिल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ना जो एनर्जी लेवल्स है ना, वो स्विच होते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा इसमें याद रखना, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, यू डोंट हैव टू गो इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल, बट जस्ट रिमेंबर के एज लॉन्ग एज द 3D इज एम्प्टी, इट्स इजियर टू फिल द। ये प्ले होना किस तरह स्टार्ट हुई थी, जस्ट से, हाँ ये प्ले हो रहा है, तो इसमें ना इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं, 4s पे फिल हुए हैं, लेकिन जब 4s 3D में आ गए ना इलेक्ट्रॉन्स, इट बिकम्स इजी टू एक्चुअली फिल इलेक्ट्रॉन्स इन द 3D, क्योंकि वो बाहर अब रिपल्शन शुरू हो गई है, तो इट बिकम्स अ लॉट इजियर टू एक्चुअली फिल इलेक्ट्रॉन्स इन द 3D नाउ। तो आपने बस क्या करना है, आपने ऑफ ऑफ प्रिंसिपल फॉलो करना है। ठीक है, यू डोंट हैव टू इतनी ज्यादा साइंस में जाने की जरूरत नहीं है। सर हाँ जी, सर इसमें तो ये केस नहीं आ सकता कि अगर 4s पार्शियली फिल्ड हो तो 3D को मतलब फिल करना होगा, इस तरह से ऐसे नहीं, केस तो 4s नहीं आ सकता ना? 4s फुल होगा पहले। वो दो स्पेशल केसेस थे, ओके वो दो स्पेशल केसेस थे जिसके अंदर 4s पार्शली फिल होता है तो 3D फिल होना शुरू हो जाता है। वो दो स्पेशल केसेस हमने नहीं किए थे? यस सर। तो क्रोमियम और कॉपर। हाँ, उसमें 4s फुल नहीं होता था ना, उसमें यही होता था। उसमें कहाँ गई हमारी एनिमेशन किधर चली गई है? अच्छा, उसमें क्या होता था कि 4s पे एक ही इलेक्ट्रॉन आता था, फिर वो 3D में जाना शुरू हो जाता था उसके पास। मतलब यहाँ पे बल्कि इधर क्रोमियम और कॉपर, क्लिक ऑन ईच एटम टू सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, क्रोमियम और कॉपर तो दिया हुआ ही नहीं है, पता नहीं कौन से दिए हुए। तो ये एक आइडिया, इस पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट रिमेंबर के ऑफ प्रिंसिपल के मुताबिक, ठीक है, इन दोनों की एनर्जी लेवल्स एक तो बहुत मिलती जुलती हैं, दे ऑलमोस्ट वेरी वेरी सिमिलर। ठीक है, और स्विच हो जाती हैं जब 3D फुल नहीं है, खाली है, तो 4s is easier to fill. लेकिन if there's electrons in 3D then it's actually easier to fill the 3D. ये बस याद रखना है। तो इसके क्वेश्चंस पे कल करते हैं। ठीक है, सो मैंने एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, सो मैंने पूछना था कि जो वो क्या बोलते हैं सर, नाइट्रोजन की जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कैसे होती है? सर उसका एक पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, हाँ MCQ था। देखो, नाइट तो उसकी पता नहीं, वो मुझे कार्बन का ही पता है। कौन सा? सर मुझे तो सिर्फ कार्बन का ही पता है, क्योंकि हमने वही वाला किया ना हमारे सिलेबस में, कार्बन ही पता नहीं उस पर फिर MCQ आया था कि नाइट्रोजन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन का, हाँ, कि वो असल बॉन्डिंग असल में कैसे वो एक ही क्वेश्चन है, वो नाइट्रोजन के ऊपर आया हुआ है ना। हाइब्रिडाइजेशन का जी। मैं आइडिया दे देता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन का आइडिया ना, आप इस तरह ले लो। एक सेकंड, कौन सी क्लास है, जस्ट सेकंड। तो मैंने आपका क्रैश कोर्स देख लिया था, उसमें मुझे समझ आ गया था हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट तो वैसे। हाँ, मैं लेकिन उसी का मैं बता दूं कि उसमें है कि अच्छा, उसमें ये कि याद रखो कि जब भी ना आपके पास है ये चार ऑर्बिटल्स हैं, S P आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है,
मतलब जो मर्जी रेंज मैंने, वी डोंट केयर के अरेंजमेंट किया है। अब उसमें ना बल्कि इसको पी को मैं एक्सपैंड कर देता हूँ, ये थोड़ा सा ना बता दूं।